Mataji, you doing the kirtan? Yes. Prabhuji, You go ahead. Is there Thank you. any I'm going to sound? check my internet. Yeah. Namyo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Mate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namyo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasato Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasato Deshatarine Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanchari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo
Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare Jayo Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna Prabhu, please accept my humble obeisances. Thank you. Yeah, thank you. Hare Krishna. So, Hare Bol Prabhuji. yes, Today tell me. Pallavi Mataji will translate. Can you hear me? Which Mataji? Pallavi Mataji. Can you say the name? Can you see her? Okay, you spot. Okay. That is Pallavi Singh Mataji? Yes? Okay. Thank you, Mata. It's your first time translating. It's good. Hare That's Krishna, beautiful. Prabhuji. Please accept my Thank humble you. obeisance. Okay. Let me offer my humble obeisances to my spiritual master. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nivrisesa Sunavadi Paskachada Satanime Daisi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Swasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Prabhupada Ki. Okay, thank you. I'm being not so good, but my health is getting better. Coughing, this and that. It's very cold here in Bengal, but we'll survive. So now, today, we have a beautiful podcast that we can start. Yes, Martha, please. Okay, yes. Yes. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Okay, you say you repeat in Hindi, right? So, first, I want to congratulate for the devotees of Pray and Preach, of Bhakti Force, and all the podcasts under Pray and Preach. Some of you got initiated, and particularly Kushbu. Mataji told me the name yesterday. I can't remember her new name. But I congratulate all of you for your, if you took shelter, if you took initiation. So congratulations, and more to come during the Gaur Purnima festival. So you can translate that, Mata. हमारे से कनेक्टेड अभी बहुत सारे डिवोटीज हैं प्रे एंड प्रीच ग्रुप से, भक्ति फोर्स टीम से, और कुछ ऐसे डिवोटी हैं जो दीक्षित हैं, जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली है, और प्रभु जी सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सबको ब्लेस करते हैं, और यस प्रभु जी. Thank you, Mata. So today we have the topic is spirituality and a healthy society. That's an interesting combination. Yes. The spirituality and healthy society. So this is an interesting combination that is sometimes we don't see the connection in there. Most people don't see it.
but actually there is a health position. आज का हमारा टॉपिक है आध्यात्मिकता और एक स्वस्थ समाज की जो कनेक्शन है वो उस पे आज प्रभु जी चर्चा करेंगे और एक बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन है और लोगों को लगता है कि इसका इन स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ का कोई कनेक्शन नहीं है, एक हेल्दी सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। Are you all getting seems like the internet issues in there, but we'll keep going, okay? Anything people tell me, if there is something I can repeat. So, what is actually the connection, spirituality and health, health in the human society? One thing has to do with the other. What is that connection? The spirituality begins with self-realization. I'm not this body. I'm spiritual. That's Bhagavad Gita 2:13. There knows me, natade. And spirituality culminates with what? With devotional service to the Lord, right? Service to the Supreme Personality of Godhead. Engage the mind, body, and words in Krishna service. स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के 2nd चैप्टर में ये हम पाते हैं, उसमें लिखा है कि स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिट सोल, हम एक आध्यात्मिक जीव हैं, हम जीवात्मा हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को हम उससे डिफाइन कर सकते हैं कि हम सब आध्यात्मिक जीव हैं और आध्यात्मिक जीव होने के हमारे जो कर्तव्य है वो भगवान की सेवा और उनके वचनों का, उनके आदेशों का पालन करना ही स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करता है। Okay, Bhakti Yoga or Bhakti, devotion to Krishna, is practical spirituality. Engage the mind, body, and words in Krishna service. Spiritual life means to understand one's relationship with Krishna and act accordingly. Yeah, that's Srila Prabhupada. Not just understanding what the Lord is, understand our relationship with the Lord and act according to that relationship. लाइफ का मतलब ये है कि भगवान की सेवा सिर्फ उनको समझ के ही नहीं की जा सकती, उनको समझ के और उनके आदेशों को और अच्छे तरह से समझ के फिर उनकी आप सेवा कर सकते हैं। यही एक भक्तिमय जीवन का आदर्श है। यस प्रभु जी। I'm not listening anything. Is everybody in there? Yes, Prabhu. Is my internet slow? Is my internet slow or is some other internet slow? How is it? I feel that's freezing. Yes, Prabhuji, we can hear you. Are we good? We can hear you, Prabhuji. Should I change? Go through. You can hear? Yes, Prabhuji, we can hear. I'm not hearing you. Okay. All right. So anything, let me know. Okay. I don't know if it's my connection or the connection over there. Right. So let me see this now. So once we follow the spiritual path, we look for self-control and purity. That's arise from regulated spiritual life. That's Bhagavad Gita 6:17.
that is very healthy. Self-control is very healthy, and purity also is very healthy. Purity in the habits of eating, in the habits of getting our daily life. So we become healthy just by becoming a devotee, and this is a plus to our life. भगवत गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक में ऐसा वर्णित है कि उसमें स्वच्छता और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे आप कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक रेगुलेटेड डिवोशनल लाइफ में आपके स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। स्वच्छता, आप प्योरिटी ना ही सिर्फ आप अपनी हैबिट्स में, अपने खान पान में, पर अपनी आदतों में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और सेल्फ रेगुलेशन, यस, सेल्फ कंट्रोल से आप और आध्यात्मिकता की जर्नी में आप खुद को और बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको और स्वस्थ और हेल्दी बनाने के लिए पर्याप्त है। यस प्रभु जी। Thank you. So, in other words, a person pursuing spiritual life naturally becomes more healthy because of certain behavior, that in purity, in mental purity, he becomes more peaceful, less anxiety, you see, so he becomes naturally more healthy as a person that is striving for spirituality. अगर कोई भी मनुष्य आध्यात्मिकता की जर्नी से कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है, तो वो स्वतः ही बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो जाता है, ना सिर्फ अपने मानसिक रूप से बट शारीरिक रूप से भी। मानसिक रूप से जब वो अपने आप को कंट्रोल करता है, तनाव मुक्त रहता है और उसका एक प्योरिटी के साथ वो अपने जीवन को चलाता है, तो वो स्वतः ही और ज्यादा हेल्दी हो जाता है स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए। यस। Good. You all hearing me? Because I think you Yes, Prabhuji, we can hear. Very unstable, my internet. Shame. Is anybody there? No, frozen, yeah? Yes, Prabhuji, we can hear you. Okay. Can you hear better now? Yes, Prabhuji, it's better now. Everybody can hear? I changed my internet. Today is my day. Okay, so by pursuing spirituality, we become healthy. But what about society? Well, when we become healthy, they uphold the social harmony. They are the pillar of society. Sense control prevents social chaos. This is the Bhagavad Gita 3:41. If society is not controlled, then how is to survive? So also, a person seeking spirituality or a spiritual person, you'll have self-compassion and towards other living entities. You'll be
a person that will not harm other living entities. For example, you'll be a vegetarian and you not kill animals unnecessarily. That causes a great benefit to the society at large, because killing animals bring very bad karma to the society. Yes, Mata. How are we doing? We good? प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में ये वर्णित है कि सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही अच्छा साधन है आपके स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में, जिससे हमारा जो आजकल समाज में जितनी आपत्तिजनक Hare सिचुएशंस Krishna. हो रही Can you all hear हैं me? वो सब Oh boy. उससे रोक सकते हैं, उससे कंट्रोल हो सकते हैं। अब और सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से आपको सेल्फ जब आपके हृदय में आप मीट मांस मच्छी अंडा का सेवन नहीं और जाएंगे तो उसे एक अच्छे और एक यस We're fighting. We're fighting for the knowledge. I'm going back and forth with the internet. We'll be successful. We're going to be heard. The transcendental words of Srila Prabhupada. So, individually, we're going to do a great deal of good things to ourselves by being a spiritual person in the Vaishnava tradition. Will be purity in the mind, purity in the body. We are required that, clean the body, clean the mind by chanting the holy name, perform devotional service. Those are things that create harmony within the society at large. You okay there, Mata? Hare Krishna. प्रभु जी बता रहे हैं जैसे आप स्पिरिचुअलिटी यस प्रभु जी जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके एक वैष्णव I वैष्णव lost यस you for a वैष्णव minute. ट्रेडिशन को फॉलो करके आप अपना जीवन Are you coming और back? अच्छा बना सकते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें गाइड किया है, जैसे बताया, उन सब चीजों को फॉलो करके आप अपना जीवन और अच्छा बना सकते हैं, समाज को और अच्छा कर सकते हैं। As spirit marriage and spiritual life as a spiritual responsibility. Okay, that creates a stable society. Children raised in devotion from early life, getting from the parents the beginnings of spiritual life, practice of spiritual life.
Okay, you can see Srimad Bhagavatam 761. That is dealing with Prahlad Maharaj and how Prabhupada is telling there how important it is to teach children the beginning of the spiritual life. Then education. So real education leads to liberation, not to just employment. Okay, that is that is the one of our tenets in Krishna consciousness. Employment is good, but also we should be a liberated employee. That is the best. Yes, Mata, please. इससे पहले प्रभु जी ने एक पॉइंट और इंक्लूड करा था, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि एक भक्त हर एक अच्छे गुण से भरा हुआ होता है। साधु के वैष्णव साधु के उसके अंदर क्वालिटीज होते हैं, तो जब इतने अच्छे क्वालिटीज होंगे तो उसको वो एक अच्छे समाज की स्थापना वैसे ही कर सकता है। और जो विवाह की विधि है, विवाह संस्कार होता है, तो उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए और एक अच्छी संतान को जन्म देना चाहिए। और जैसे जितने अच्छे क्वालिटीज एक वैष्णव माता पिता में होंगे, वो अपने बच्चों को भी वही क्वालिटीज सिखा सकते हैं। और जैसे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो से हम ये 7वें स्कंद से हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रहलाद महाराज का। जैसे उनको गर्भ में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ श्री भगवान से संबंधित, वही उन्होंने अपनी आगे आने जन्म के बाद भी उसको कंटिन्यू किया। तो एक बच्चे को भी ऐसे ही उसके माता पिता अच्छी क्वालिटीज और वो शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं, जिससे ना तो सिर्फ उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिले, बट उसके मोक्ष का मार्ग या लिबरेशन मुक्ति का मार्ग भी खुल सके। यस प्रभु जी। Thank you, Mata. Good job. So, it's spirituality and economy. How the spirituality changes a little bit our economy. First is simple living and high thinking. That is, according to Bhagavad Gita 3:14, Prabhupada is teaching us also with the Vedic tenets that we should live simple with the thought very elevated. So we don't get distracted by so many allurements in the modern world, and there is many allurements, and you all know that. And we should learn how to simplify our life so we have the space for our spiritual life. Don't wait, like Prahlad Maharaj said, don't wait until you are an old man or old lady and then you start thinking about your spiritual life, because then, what have you done? It's like start to move a mountain. But if you start early, then you become a pro spiritualist. Just like all the athletes, they start 6 years old, 8 years old. They start practicing athletics, gymnastics, whatever Olympics they are into. They start very early. And by the 18, 19 years old, they are in top shape. You see? So we should start early too and have that part of spirituality cultivated in our heart, just like we're doing now in association with the devotees. प्रभु जी बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमें अपने अर्थ में भी, इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। जैसे उनका श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एक जीने का आइडिया दिया था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। आप एक बहुत ही प्यारा सादा जीवन व्यतीत करके अपने विचारों को श्री भगवान से जोड़ के अपना जीवन और अच्छा बना सकते हैं। ऐसा करके आप एक बहुत अच्छी लाइफ भी व्यतीत कर सकते हैं। और हमें किसी भी अगर आप एक सादा जीवन जी रहे हैं तो आपको बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता है। आपको और सब जितनी चीज़ें उससे आकर्षित नहीं होना है,
जो आपके आध्यात्मिकता के सफर में आपकी सहायता ना कर सके। तो जैसे हम प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चे से बचपन से ही आपको भक्ति करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपको वृद्धावस्था में इतना कष्ट ना हो, या उसमें आपको भक्ति करना आसान हो जाए आपके लिए। तो तो सिर्फ ये भक्ति में तो आपको ये लाभान्वित करेगा ये आइडिया। और जैसे आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। जैसे कोई जिम्नास्ट है या कोई खिलाड़ी है, वो बचपन से ही उस खेल को खेलता है, तो वो खेल को खेल के ही वो धीरे धीरे अपने आप को एक स्तर पे पहुंचा लेता है, जहाँ पे वो आसानी से उस खेल को एक बहुत ही कम उम्र में उसका खिलाड़ी, बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है उस खेल का। तो ये भक्ति भी ऐसे ही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये एक पहाड़ को हिलाने के समान है। तो आप पहले से ही तैयार रहेंगे, बचपन से ही तैयार रहेंगे, तो आप धीरे धीरे उसको हिला सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। That was a big one, huh? So, but some of us, we may not so young. Some of us may be more advanced in age. But the beautiful thing about Krishna consciousness is that it doesn't matter at which stage you are in your life. Once you step in Krishna consciousness, you are in the goal. You reach the goal. You chant the holy name. You take shelter of the advanced devotee, the spiritual master. You are reading Srimad Bhagavatam. You are associating with the devotees. You're there. Now you just have to keep practicing this. You see, and it's very easy to be done. So therefore, in Kali Yuga, it said the demigods, they waiting to take birth in Kali Yuga because they can go in Harinam Sankirtan, and they can, practice devotional service because, it's very easy, like a cheat code. You see that you can go very fast to Krishna because everything is given very nicely for us by the mercy of Prabhupada and the Acharyas. Every time the Acharya comes in, they make it easier and easier for us. So beautiful books, beautiful philosophy, beautiful holy dance, like going around here. Mayapur is getting so beautiful. It's getting big also, so many buildings, but what to do? People are coming here, getting the mercy, and many holy places, many beautiful deities all over. Hold on. You see, so we have beautiful, the deities are very beautiful. And, we see, the beautiful service they have for Radha Madhava, Panchatattva, Nrsingadev, and Srila Prabhupada. So let me go back to the economy here. So we do our simple living and high thinking, but we have to do a high thinking. Otherwise, simple living becomes very bored. Oh, this is very bored. I want to go do something else. I want to go to a movie. I want to go to a racetrack. I want to do something else. So we have to be a mind absorbed in devotional service, beautiful devotional service. And then we can, live very simple with an elevated thought. Okay. And we don't stress, try to get overwhelmed material success more than we need. We just strive for what we need. And then we can have a balanced life. And that is the sense of happiness that the spiritual life gives to you. And that's very healthy also. You're free from anxiety. प्रभु जी बता रहे हैं कि हम सब में से कोई इतना भी यंग नहीं है, या बहुत ही अपनी एज में एडवांस हो गया है, उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वो भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति में प्रवेश करते हैं, आपको श्री भगवान की प्राप्ति निश्चित है। आपको उसके लिए भगवान का नाम लेना है, भगवान के
अच्छे और उच्च कोटि के भक्तों का संग प्राप्त करना है, श्रील प्रभुपाद जी के टीचिंग्स को फॉलो करना है। और ऐसे ये बहुत ही इजी वे है भगवान को प्राप्त करने का। कलयुग में जो डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, ये भी चाहते हैं कि वो पृथ्वी पे आके भगवान के नामों का जप करके, भगवान के भक्तों का संग करके भगवान को प्राप्त करें। तो ये सब हम मनुष्य को, हम सब जीवात्माओं को मनुष्य देह में बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा प्राप्त हो गया है। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। और जब हम स्पिरिचुअलिटी और इकोनॉमी, अर्थ की बात करते हैं, तो हमें अपना भी जो धन है, वो धन किसी भी अधिक मात्रा में खर्च नहीं करना चाहिए। वो उन चीज़ों में जहाँ पे हमें उसकी नीड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। मूवी देखना, किसी एक रेसिंग कार रेस ट्रैक पे जाके रेसिंग देखना, उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही वो हमें आध्यात्मिक जर्नी में, हमारे आध्यात्मिक सफ़र में हमें लाभ पहुंचाएंगी। हमें उतना ही लेना है जितना हमें अपने आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। यस प्रभु जी। I was talking today to my god brother Satvik Das, and we're preaching. We're preaching in the old times. We're preaching here in Mayapur. We went to America. We collect money for Radha Madhva. We preaching in India, in traveling Sankirtan, and now we come to the conclusion that the young people here in India, they're much more smart. They're taking up to Krishna consciousness. People who very intelligent. They have degrees, biotech. They are teachers, engineers. Because in our time, they didn't take very seriously. You see, there was not very in Mayapur, not just the regular people that they come from the villages in here like that. And now we have a very high strata of society coming, taking up Krishna consciousness. So that is a motivation there for them. They already reach a level of satisfaction in the material world, but they're looking for something more. And that is a spirituality that brings the balance of our material life. Otherwise, we keep seeking something that we cannot find, and it's inside the heart, it's locked. Then you have to unlock by the mercy of Guru and Vaishnavas. We have to unlock that in devotional service. You see? So we see now the effect in society that this does. The healthy society is a society that is a spiritual society. प्रभु जी बता रहे हैं कि जब वे अपने गुरु भाई सात्विक दास प्रभु जी के साथ बात कर रहे थे, और जब भगवान के बारे में प्रचार कर रहे थे, तो वो आजकल ये देख रहे हैं कि जो यंग पीपल है, जो युवावस्था है, आज की युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। और वो पहले के ज़माने जैसे जो लोग गाँव से आते हैं, वैसे नहीं। आजकल जो समाज की जो स्थिति है वो और सुधर रही है, लोग बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। श्री कृष्ण भावना भावित आंदोलन को समझ रहे हैं, और जो असली खुशी है, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जो असली खुशी है वो उनके अंदर ही है, पर उसको खोलने के लिए उनको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, और इसीलिए लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो अब हमें इन सारे पॉइंट से ये भी पता चलता है कि एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से किया जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी से किया जा सकता है। यस प्रभु जी। So, spirituality, the nation. So, a leadership must be guided by Dharma. That's Bhagavad Gita 1:2. You see, that is leadership. The people
follow a leader who is God conscious. Then God conscious rules bring peace and prosperity to the world in general. A corruption diminish when leaders are self-realized. You cannot corrupt a person that is detached from things of the material world, adharmic things, corruption, stealing money. We see so much, in the world nowadays, pure Kali Yuga. Excuse me. So corruption is less when the leaders are self-realized. So there is unity also beyond bodily designation, race, and nationality. That is also very important. You see that the unity is based on actual unity, of the soul of all living entities, not black, white, yellow, this religion, that religion. We see as the soul, and we see the equality of the soul in every living being, and we act accordingly, and that is bring peace and prosperity in the world. A proper unit based on the spiritual self-centering. अपना के हम एक बहुत ही अच्छे समाज की भगवत गीता में लिखा है कि जितने भी धर्म अगर हम वो करें अपनी आध्यात्मिकता के सफर में, और इस देश को अगर हमें और एक बहुत ही अच्छा समाज बनाना है हमारे सोसाइटी को, तो हम उसके लिए आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं। वो पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी Yes. आवाज आ रही है? What? Tell me. Is voice coming, Prabhu ji? Somebody write in the chat that voice is. Yeah, we just have to. Maybe it's me. Maybe it's from your side. Just keep going, Mata. Don't worry. You may repeat a little bit, and then we keep going. What to do? Yes, Prabhu जी। तो एक अच्छे आध्यात्मिक समाज का निर्माण करेंगे हम अगर हम एक कृष्ण भावना से जुड़ते हैं तो, और अगर हम ये जो भ्रष्टाचार है जो अभी हमारे देश में ये सब हो रहा है, उसको हम पूर्णतया से नष्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इतनी सामर्थ्य है, और अगर हम एक साथ, हम ये पूरा वर्ल्ड अगर एक साथ हो जाए और स्पिरिचुअलिटी के कदमों पे चले, और कोई भी भेदभाव ना हो, ना रंग को लेके, ना उनके धर्म को लेके, ना किसी भी चीज को लेके, तो एक बहुत ही अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। So, Prabhupada here, he's saying that a society without God consciousness is a society of polished animals. That's a very heavy statement, but it's a true statement, because it doesn't have any structure to bring a proper focus in our spiritual being. It's just material, and hedonism means the purpose of this life is for my pleasure. That's it. You see, and sometimes people feel a little guilty. They do some charity so they don't feel so guilty that I'm enjoying so much. You see, but this is not the purpose of life. Purpose of life is to know, understand, and serve the Supreme Personality of God. Sorry, Prabhuji, can you please repeat? Okay, from where? Polished animals? That's a good one. Yes. Proper saying here, a society without God consciousness is just a society of polished animals. You see, it means they look good in the outside, but inside
they are just not no, rotting, nothing good in it. You see, because of the nature of the activities, people are just working for their self-pleasure. And then they work in that situation, they're not good. And they have to change their ways by spiritualizing their life. श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि जो आजकल की सोसाइटी है, अगर वो गॉड कॉन्शियसनेस से प्रभु से विलग होके कार्य करे तो वो एक बहुत पॉलिश एनिमल, जैसे कोई भी बहुत ही जानवर को हम बिल्कुल पॉलिश करके रख दे तो वैसे ही रहेगा। बाहर से वो बहुत साफ सुथरा है, पर वो अंदर से उसकी जानवर जैसी ही प्रवृत्ति रहेगी। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता से और उसको पूर्णतः अपना के ही दूर करी जा सकती है। यस प्रभु। So, to conclude, Bhakti purifies all activities. Okay? Even imperfect practice brings permanent benefits. There's many examples of that. A little service can free one from a great calamity. Devotional service satisfies the soul completely satisfies the soul. Sometimes the devotees think, but I'm not completely satisfied. So you look in your heart, you see you are attached to something there. Something is holding you back. You have to work on that. Then we have here the final message. You want to finish that part first, Mata? Go ahead. I'm just going to go to the final message in here. Go ahead, Mata. यस। भक्ति को हम प्लीज रिपीट प्रभु जी। What is that? Yes. The first one. The Bhakti purify all activities. Yes. Even imperfect practice brings permanent benefit. Okay? Even if you do wrong devotional service, still we get a permanent benefit. Devotional service satisfies the soul completely. Go ahead, Mata. यस प्रभु। भक्तिमय जीवन को अपना के अगर हम थोड़े बहुत त्रुटि पूर्वक भी आगे बढ़े, अगर हमसे ज्यादा ठीक से मतलब एक प्रॉपर वे से भक्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देगा, उससे हमें लाभ ही होगा। और यस प्रभु। Finish? Okay. So, the universal solution. Bhakti purify all activities. This is the Bhagavad Gita 9:27. Even, wait a second. Final message. Okay. Bhakti transforms the heart. Okay. I can attest to that. My heart's being transformed. Do we all feel your heart's being transformed a little bit, right? So, Bhakti transforms the heart. Transformed heart build healthy families. Healthy families form strong societies. Strong societies create peaceful nations. Real welfare work is spreading Krishna consciousness. तो अगर हम इसको समरी फॉर्म में बताएं, हमें समरी यही है कि हम सबको अपने जीवन में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से आपका जो मलिन हृदय है वो परिवर्तित होगा। हृदय परिवर्तन से आपके जितने परिवारजन हैं उनसे आपके हेल्दी रिलेशंस बनेंगे। हेल्दी रिलेशन से आपकी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी और हमारी एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा समाज हमारे पूरे देश को और सब नेशंस को और सब देशों को भी बहुत ही अच्छे मार्ग पे ला सकता है। तो हमें भक्ति को पूर्णतः अपनाना चाहिए अपने जीवन में।
Yes? So, the conclusion is properly said, the Krishna consciousness movement is meant to create ideal men and women for the benefit of human society. Jai Prabhupada. See, this is what we're doing here. Create the ideal men and women for the benefit of human society. श्रील प्रभुपाद का यही आइडिया था कि वे एक बहुत ही अच्छे मेन और विमेन एक आदमी और एक स्त्री का निर्माण करें जिससे हमें एक बहुत ही अच्छा समाज मिले और जो भगवान के उपदेशों और उनके आदर्शों पे चल सके। जय श्रील प्रभुपाद। यस प्रभु जी। Now, all of you, you may feel, well, I don't feel ideal men or women. I don't feel ideal of anything, but you are. Just the fact that you are just not struggling, but you're working hard for your devotional service. It makes you a brave man and a brave woman, in this world. And Krishna recognize your service. You see, each one of you. You see, because it's a beautiful thing. People are struggling out there for all kinds of things, for money, for wealth, for men and women, other men, other women. We are struggling for devotional service. This is a brave and amazing feat, all of you. So, in a sense, we are all ideal. We're seeking the lotus feet of Sri Guru and Gauranga. प्रभु जी बहुत विनम्रता से अपने बारे में कह रहे हैं कि वो एक आदर्श तो नहीं है, पर वो हम सब से कह रहे हैं कि हम सब आदर्श हैं, क्योंकि हम श्री भगवान की सेवा के लिए इतने ज़्यादा संघर्ष को अपने जीवन में अपना रहे हैं, संघर्षों से लड़ रहे हैं और बाहरी दुनिया के लोग कितने सारे संघर्षों से जिनका कोई मतलब नहीं है, वो उन सब में जूझ रहे हैं। पर प्रभु जी हमें ये बता रहे हैं कि हम सब बहुत ही ज़्यादा आदर्श स्थापित कर रहे हैं और अपने गुरु और गौरांग की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, श्री भगवान की सेवा के लिए हम अपने भक्तिमय पथ पे पूरी तरह अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इस प्रभु जी। So, we come to the conclusion of this podcast. First, I want to apologize for all of you that I'm sick. I've been like, I got the whatever flu, cough, whatever it is in here. Everybody got, everybody's going out coughing, everything. You get it. So I took medicine and this medicine and make it. So, but I'm here. I'm doing beautiful job. And I love this to talk about Krishna to all of you, to the people in general. So I ask for apologies. It was not very, super class anything, but thank you so much to give the opportunity to be able to express myself in here. Anybody has any question, anything, this is a good time to have a question. तो ये हमारा निष्कर्ष था और इस पे प्रभु जी कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से बहुत ही माफी चाहते हैं कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो आप सब से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग ने इतना समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट को सुना और प्रभु जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो आप कृपया प्रभु जी से पूछ सकते हैं। Hare Krishna Prabhuji Pranam. Is bhakti means to copy and paste? Okay, let's see this here. I have to. Okay, thank you for Lakshmi Narasingha, Rupa Devidasi, Lakshmi Narasingha.
Hare Krishna, Krishna Bandhu, is Bhakti means to copy and paste. I don't know what that means. If you can explain to me a little bit better, then I can probably answer something. Okay? I don't know what that copy and paste means. And I don't कुणाल want प्रभु to. जी, आप प्रश्न को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करिए। प्रभु जी को वो प्रश्न समझ नहीं आया। हरे कृष्णा माता जी, क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? यस प्रभु जी, आप हिंदी में बोल सकते हैं। जी जी, मैंने सुना है कि मतलब भक्ति मतलब होता है ना कि जैसे दूसरे को देख के जैसे हम सेम एज इट इज अप्लाई करें, मतलब अपने से कुछ ऐड ना करें और ना घटाए। तो क्या इसका ही मतलब भक्ति होता है? ये मतलब इससे मतलब ये कहने का मतलब था। Prabhuji is saying that copying someone to see someone that he is performing bhakti. So the person who is seeing, so that person, so the person who is seeing, he or she should have to acquire all that whatever the person who is performing bhakti, or we can do plus minus in that all that thing. Okay, if I understood correct, if somebody is doing devotional service and he inspire you, you take the inspiration as much as you can and perform your devotional service. Krishna doesn't make comparison. Krishna accepts your service, accept the service of the devotee, maybe more advanced, maybe not so much advanced. Krishna is the ultimate balancer. He balances everything. But if you see a devotee doing a very nice service, then you may copy, you admire certain things. Oh, his dhoti is so nice. I want to get a dhoti like that. No, he's chanting very nice. I want to chant like that, very strong. It's natural. This is very natural. You don't worry a thing, but fix in your devotional service. Concentrate in your service. You get inspiration from other people, but you got concentration in your service, focus on your service to Krishna and Guru. यस प्रभु जी बता रहे हैं कि आप अपने पे फोकस करें और आप इंस्पायर हो सकते हैं उनसे, जैसे वो सर्विस कर रहे हैं। अगर वो आपको इंस्पायर करता है तो आप उसको अपने भक्तिमय जीवन में अपना सकते हैं। और कृष्ण सबसे ज्यादा भावग्राही है और वो आपके भाव को ही ग्रहण करेंगे। आपके जितने कार्य हैं, भक्तिमय कार्य हैं, उसमें आपका भाव ही ग्रहण करेंगे। और जितना जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिले श्री गुरु से, श्रील प्रभुपाद से, श्रीमद् भगवद गीता से, आप उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं। यस प्रभु जी। For example, I see the Pujari here in Mayapur, and I have known him for a long time. He's like a rock. On time, every day, he's doing the greetings, he's doing the Mongol Artik. And I admire this devotee. I admire the Pujaris in Mayapur. They have outstanding service. Could I do the job they're doing? I don't think I could. But I take that admiration to my service. I'm doing here, I'm talking to people, I'm preaching. So in this job I'm doing now, I take that admiration and I put in here, in the work I'm doing now. And do the best I can, just like they do the Pujari work the best they can. You see? And that is how we grow in devotional service. We get admiration from the devotees, and you put in your own service what we see out there. You got that, Mata? हाँ प्रभु जी बता रहे हैं कि जब वो टेम्पल में एक पुजारी को देखते हैं तो उससे वो उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं अपने हृदय में और उनको बहुत एडमायर करते हैं। पर जिस तरह से वो सब भगवान की सेवा करते हैं, सब कुछ, अगर आपके जीवन में उस चीज को पूरी तरह उतारने का वो उस टाइम आपसे ना हो पाए तो आप उससे जितना आप इंस्पायर हो उतनी चीजें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं।
Yes, Prabhuji. Okay. Anybody has any quick question, I can answer. Otherwise, we're gonna have our next podcast in Wednesday. By the way, today I met Prabhu. I try to remember. Anyway, Prabhu that wrote the book Harisauri. Yes. I met Harisauri. He was in the market. He sits in a little table. He put all his books. He's selling his books in the table. He's sitting there. You know, there's a lot of things going on, but he's quietly there. I asked him, Prabhu, how many books you did today? No, today no books yet, Prabhuji, like that. I love that guy. So he's here, and next time I met him, I'll probably talk more about, he has a new book coming out in February. I think it will be a last book of the 5 books he have out, will be 6 books. So we have a long time to read this. So we have a lot of fun. That's good. I told him I'm reading about the Nellore temple. There was a trick way try to get ISKCON in a tricky fashion there, but they didn't do it. Okay, so I thank you all. I apologize today. No, I've been bad all day, and my wife didn't even want to come in here. I'm sweating now and cold and sweat. So this is the material body, but we have to do our duty. Krishna said, "You do your duty," and I couldn't go without seeing my little